Okay, so let's start our lecture 13. Okay. So in our last lecture, uh, we introduced the Fourier transform that is useful for discrete time aperiodic signals. So discrete time Fourier transform. So the two equations that are part of this transform are, so given signal x of n, which is generally aperiodic signal, if you multiply this with e power minus j omega n and then take the summation from minus infinity to plus infinity, that will give us the Fourier transform of the signal, which is represented by this notation. And if we want to convert back the given Fourier transform into the original time domain signal, then we can make use of this equation. Integration over 2 pi, because the Fourier transform of discrete time signal, it is having a periodic nature. So we always integrate over 1 period. So these are two equations that are part of discrete time Fourier transform. And in our last lecture, we talk about number of properties of discrete time Fourier transform as well. Okay. So today we are going to use this particular tool for those systems which can be represented in terms of difference equation. Okay. So let's find out the application of this tool. So now we want to look at properties. We have already covered that. Systems which are characterized by linear constant coefficient difference equations. So if there is a discrete time LTI system whose input is represented by x of n and output is represented by y of n. So the input and output of this system can be represented by an equation like this, which we have already covered. It's known as linear constant coefficient difference equation. So this is nth order equation. So the difference that we are taking of output is up to n. And on the right hand side, we will have terms that are dependent on input. And we can represent this as k from 0 to n. This is what we call as linear constant coefficient difference equation. So one possibility or one option can be that we can solve this difference equation, and that will help us to characterize this system. So for any given input, we will be able to find out the output once we find the solution of this equation. But now we have a tool available that we can apply, and that is DTFT2. So rather than solving this equation in time domain, we will apply Fourier transform on this equation, and then we will see what type of result we can get. So apply discrete time Fourier transform to this equation. So when you take the
Fourier transform of left hand side and Fourier transform of right hand side, what we will get. So important point is we can make use of the properties of the DTFT, which we have covered in our last lecture. So one of the property that we can make use of is that if given signal x of n has a Fourier transform pair represented by x of e j omega. If we apply the time shifting operation to the signal, so if x of n becomes x of n minus n naught. So this is the time shifting property that we have covered about DTFT. So according to the time shifting property of DTFT, when you apply time shifting to the signal, what happens to its Fourier transform? The Fourier transform gets multiplied with Yes. e power minus j omega n naught. ठीक है, तो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, अगेन दिस इज अ जनरल रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें हमारा सिग्नल y है और y ऑफ n का n माइनस k का मतलब है कि हम टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगर हमारे पास y ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हो कैपिटल Y, तो नाउ अगर हमारे पास y ऑफ n माइनस k होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e पावर माइनस j ओमेगा k हो जाएगा इनटू y ऑफ e j। और इस तरीके से लेफ्ट राइट हैंड साइड पे अप्लाई करें। सो आफ्टर अप्लाइंग DTFT व्हाट विल हैपन, व्हाट वी विल गेट, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, these are constants, हम इस तरीके से लिख लेंगे, and then we have e power minus j omega k Fourier transform कैपिटल Y किया जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स b के e पावर माइनस j ओमेगा k कैपिटल X e j। Now we can take this term outside this one because variable is k, and similarly we can take this term out because variable is k. So we get y, capital Y can be taken outside, and inside the summation operator you are left with this thing, and on the right hand side capital X can be taken outside of the summation operator. Then we can bring this term to the left hand side. So we get y j omega divided by capital X e j omega, and we can bring this term to the right hand side. So here, and this is here. So we get this thing. Now, the expression that we have on the left hand side, ये क्या चीज होगी? What is this thing? Frequency response, sir. Frequency response, जिसको हम represent करते हैं with capital H function of each. So
What is the final result? Frequency response of a discrete time LTI system, which is represented by linear constant coefficient difference equation, can be calculated with the help of this standard equation. So this is frequency response of discrete time LTI system. So what advantage we can get from discrete time Fourier transform? With the help of discrete time Fourier transform, we can easily calculate the frequency response of a system, which is represented by an equation like this. All you need to do is, if you look at the structure of this equation, all we need to do is हमें क्या करना है कि coefficients find करना है कि input के साथ कौन से coefficients हैं और denominator में output के साथ कौन से coefficients हैं. If you look at the structure, अगर आप देखें ये b के जो हैं ये कौन से coefficients हैं जो कि x के साथ, a के are those terms जो कि y के साथ, ठीक है. And depending upon के यहाँ पे k की कौन सी हो, k equal to 0 means के we are dealing with y of n, और जब k 1 हो जाएगा it means we are dealing with the first difference, and similarly so on, ठीक है. You can relate this idea जो हमने continuous time Fourier transform के केस में भी किया था. So if continuous time LTI system is represented by linear constant coefficient differential equation, उसको भी जब हमने CTFT अप्लाई किया था, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट इसी किस्म का था कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स by just looking at the structure of the equation हम directly find कर सकते हैं कि इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा. So अगर इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, that will be useful to get this idea. So अगर हमारे पास एक सिस्टम की इक्वेशन में गिवन है कि y of n minus a y of n minus 1 equal to x of n. So we are given this information and we are asked to find out कि इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा. So जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डेवलप कर ली है हम इसको यूज कर सकते हैं. उसको यूज करके हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा. न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में हमारे साथ जो टर्म्स हैं उनका ताल्लुक किस चीज के साथ है, इनपुट के साथ p of k, एंड इस टर्म का ताल्लुक ये है कि k की कौन सी वैल्यू, ठीक है. सो इफ यू सी दैट bk मींस x of n minus, ठीक है. इसको आप रिलेट करें इस इक्वेशन के साथ. So what should I write in the numerator? क्या लिखूं मैं जी numerator? 1. Because we only have x of n, we don't have x of n minus 1, x of n minus 2, और x of n के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इस वजह से 1 आ गया, ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, डिनोमिनेटर which is related 1 minus a. yes, so इसके लिए आ जाएगा 1 माइनस, और इस टर्म के लिए क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और e पावर माइनस 0. So this is how we can easily calculate कि इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या. एंड देन अब हम इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं, h of. तो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स जो हम सॉल्व कर रहे थे DTFT के, उस केस में हम फाइंड कर चुके हैं कि इस किस्म का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कौन से सिग्नल के लिए है. इफ रिमेंबर हमने जब सॉल्व किया था a raised to power n
u of n। so इस एक्सप्रेशन को देख के डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इस का कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन जो फंक्शन है वो ये होगा। ठीक है, वी डोंट नीड टू सॉल्व, हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेल नोन एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका ऑलरेडी हमें पेयर पता है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो है वो ये है। ठीक है, so there is a table given in the book, उस बुक को अगर आप बुक में एक टेबल है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइम डोमेन फंक्शंस हैं और उनका corresponding Fourier transform given है। So that table will help you to solve many problems without going into the detail step by step process के आप किसी भी Fourier transform से corresponding अगर आपने time domain function find करना है, so you don't need to go through that step by step process, directly आप pair से उसका identify कर सकते हैं, जिसको हम later on एक और example में भी use करेंगे। So let's consider another example। So we are given information about a system जिसको हमने इस equation form में represent किया हुआ है। So let's find out कि इस system को हम कैसे इसका analysis करेंगे। So again, we need to find two things. We need to find out frequency response and impulse response. So हमने ये find करना है और h of n find। तो पहले इसका हम frequency response find कर लेंगे। So numerator में हमारे पास क्या आ जाएगा? Simply 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस टर्म के लिए क्या आ जाएगा? 1। इसके लिए क्या आएगा? -3/4। और ये क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस है 1 है तो ये आ जाएगा e पावर -j। इसके लिए क्या आ जाएगा? 1/8 और यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे e पावर -j2। तो ये आपने इसका डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने फाइंड कर दिया। अब इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे? सो वन ऑफ द टेक्निक, अगर हम स्टैंडर्ड टेक्निक पे जाएं तो क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह की इक्वेशन यूज करें, इसमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करें, यहाँ पे हम h को पुट करें और यहाँ से हमारे पास h ऑफ n आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि h ऑफ n फाइंड करने के लिए अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूं, हमें ये एक इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हमने फाइंड कर लिया। ऑल वी नीड टू डू इज उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और h ऑफ n निकालना। बट इट्स बेटर कि हम एक दूसरा मेथड यूज करें जो हमने CTFT में भी यूज किया था, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। हम इस एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर जो वेल नोन ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं उनकी मदद से हम h ऑफ n फाइंड करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज using method of partial fraction। सो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन वो आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 1 -3/4 पावर -j ओमेगा प्लस 1/8 e पावर -j2।
So first thing that we need to do when we use method of partial fraction expansion is to factorize this. इस सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं as if it is a product of two terms. So 1 minus 1 by 2 e power minus j omega, this is the first order pair, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें with 1 minus 1 by 4 e power minus. So ये इसका correspondingly factor form आपके पास, the first factor and second. And now what we need to do is कि ये जो expression हमारे पास आती है इसको हम equate कर लेते हैं कि it is equal to, let's say, a divided by 1 minus 2 e power minus omega plus b divided by 1 minus 4 e power minus. And then all you need to do is, with the help of this method, जो कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं, you need to find out the values of those constants. As a result, ये जो given expression हमारे पास है, this one, इसको हम इस form में लिख सकते हैं. So I'm going to write the answer. This is pure mathematics, nothing related to signal systems. So इसको मैं जो constant की value आपके पास आई जाएगी, a की वैल्यू 4 के बराबर आएगी आपके पास. So you get 4 divided by 1 minus 2 e power minus 2. और b की वैल्यू आपके पास -2 के बराबर आएगी. So you get -2 divided by 1 minus 4 e power. So once you reduce the Fourier transform to this form, then अब हम इसको directly find करेंगे कि ये किस टाइम डोमेन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है. ऑफ कोर्स वी नो कि इसका जो इनवर्स होगा वो इंपल्स रिस्पांस. सो ये जो आपको नजर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. सो जो स्टैंडर्ड आपके पास है कि a ऑफ n u ऑफ n का जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e पावर माइनस. तो अगर आप इस स्टैंडर्ड पेयर को देखें और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी के यहाँ आपको इस तरह का नजर आ रहा है. ठीक है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? ए की जगह मेरे पास क्या चीज है? ए की जगह मेरे पास है दिस 1 by 2. आई विल से 1 by 2 ऑफ n u ऑफ. सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास पेयर है इस पे भी हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. So you will say -2 1 by 4 raised to the power n u. So with the help of this standard pair हमने इस expression को directly इसका inverse find कर लिया है, and this is the result which we get. Now let's consider another example before we move on to the next topic. Let's assume कि हमारे सिस्टम का जो इनपुट है x of n वो हमें गिवन है 1 by 4 raised to the power n u. ये हमारे सिस्टम का इनपुट है और हमारे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो गिवन है. सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये भी हमें गिवन. ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें ये चीज गिवन. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज वी नीड टू फाइंड आउट कि इस सिस्टम का टाइम डोमेन में आउटपुट क्या होगा और
correspondingly frequency domain में इसका आउटपुट क्या है। So rather than कि अगर हम टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन को यूज करें, सो समवन में से कि मेरे पास x ऑफ n भी है और मेरे पास h ऑफ n भी है। तो अगर सिस्टम का इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता है, वी नो कि आउटपुट हम कैसे फाइंड करते हैं, वी नीड टू कन्वॉल्व x ऑफ n विथ h ऑफ। सो हम इस तरीके से y ऑफ n फाइंड कर सकते हैं और फिर y ऑफ n फाइंड करने के बाद इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके हम इसका वो कैपिटल y फाइंड कर लेंगे। बट that will be more difficult and time consuming. It will be more convenient कि पहले मैं सिस्टम का आउटपुट फाइंड कर लूँ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डोमेन में मैं ये फाइंड कर लूँ और फिर मैं y ऑफ n फाइंड करूँ। एंड वी नो दैट कि टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करनी पड़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारे पास DTFT का जो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, वी नो कि कन्वोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो बेस्ड ऑन दैट अगर मैं कैपिटल Y फाइंड करना चाहूँ तो आई नो कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट के फोरियर ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये जो टाइम डोमेन में इक्वेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड दैट विल मेक आवर जॉब इजी। इनपुट का ऑलरेडी सिंपल हमें पता है कि इस तरह के फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 by 4 e power माइनस। सो इससे हमने ये फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास कैपिटल X हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन है इस फॉर्म में, या इसको हम दोबारा से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो X आपके पास इसके बराबर है। सो दिस इज ये आपके पास X आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ एज के साथ जो कि बराबर है 2 डिवाइडेड बाय into 1 minus 1 by 4 e power. So that is the expression for capital Y. You can see that हमारे पास जो expression है इसमें there are these are two same pair, तो इनको हम express कर लेंगे as square. So हमारे पास ultimate expression क्या बन गई कि 2 divided by 1 minus 1 by 2 e power minus j omega. This is one factor, and then we have 1 minus 1 by 4 e power minus j omega whole square. So इन दोनों को मैंने combine कर दिया, and this is what we get. And again, whenever we have a pair of factors which are repeating, तो फिर हम इसको in terms of partial fraction expression जब मैं इसको लिखता हूँ तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, we will say a divided by इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इसको मैं a11 कह देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 minus 1 by 4 e power minus j omega, and then a12 कह देते हैं और फिर लिख देते हैं 1 minus 4 e power minus j omega square, and then थर्ड के लिए मैं सिंपली लिख लेता हूँ b जिसका ताल्लुक इसके साथ है, सो b डिवाइडेड बाय 1 minus 2 e power minus. This is something जो ऑलरेडी मैं CTFT के केस में भी आपको बता चुका हूँ. So whenever you have repeating terms तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा. Then all you need to do is with the help of partial fraction method इन constant की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है.
So इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? So you get -4 divided by this thing. So this is the value of A11. Then A12 की वैल्यू आपके पास -2 आएगी. So -2 divided by this expression. And finally B की वैल्यू आपके पास 8 आएगी. So you get this. Now we can find out the time domain expression with the help of the Fourier transform pairs. ठीक है? The first one, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे -4, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे, and then 1/4 raised to the power n u of n. Okay. जो सेकंड टर्म है हमारे पास, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है वो है -2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. सो इसके साथ हमें एक और टर्म ऐड करनी पड़ती है, दैट इज n+1. n+1 and then same expression 1/4 raised to power n u of n. और फाइनली इसके लिए हम क्या लिखेंगे? +8 कांस्टेंट फैक्टर एंड दिस 1/2 of n u. So this is how first we find system output in the omega domain, and then with the help of the standard Fourier transform table हम easily जो हमारे पास टर्म बाय टर्म जो एक्सप्रेशंस आ जाती हैं उन पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल जो मेथड है वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है जो हमने CTFT के केस में भी देखा था. सो अगर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको आप CTFT टूल अप्लाई करके easily सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड यूज करके यू कैन फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम रिस्पांस इन टाइम. और अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, उसको आप DTFT टूल अप्लाई करके आप इजीली सिस्टम का पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को उसके इम्पल्स रिस्पांस के साथ. सो देयर इज अ क्लोज रिजेम्बलेंस इन द होल प्रोसीजर के सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करना और फिर उससे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस फाइंड करना. ओवरऑल जो है सिमिलर मेथड है. सो मेक श्योर के इसको आप प्रैक्टिस कर. सो लेट मी move on to the next meeting session, and we will move on to the next topic. Okay, so see you in a while.